That's a photo of me, my family, and our home in North Carolina. This is more than a place we come back to at the end of the day. It is our little piece of America. But this is not my only home. I also have a home in Pakistan, my homeland, where I was born and raised, the place that will always be home in my heart. I navigate between these two worlds on a daily basis, balancing my love for my adoptive and my birth country. It is not always easy, especially when the two end up being at loggerheads. Osama bin Laden, living in luxury meters away from a military academy in Pakistan, killed by a single American bullet to the head. Now, US-Pakistan relations face an uncertain future, with many in Washington questioning if Islamabad is a reliable ally. John Brennan, the president's counterterrorism advisor, says it's inconceivable that bin Laden didn't have some sort of support system in Pakistan. What I find incredulous is the notion that somehow, just because there is a private support network in Pakistan, the state, the government, and the military of Pakistan should be blamed. You haven't lived until you've seen Lahore. So goes the saying in the city of over 1,000 years. Sometimes, it feels like living has become an accomplishment in itself. What was hailed as a beacon of free thought, of arts and culture, is now haunted by a constant sense of fear and foreboding, lest there is an attack and all of our ambitions fall victim to it. Dramatic pictures of the moment just before one of two suicide blasts rocked the shrine. You can see one man run past the camera, chased by a security guard. The blast follows shortly and panic ensues. In the aftermath, evidence of the carnage, clothes and shoes scattered everywhere. It has been years since the attack on Data Darbar. Still, it is an image I cannot get out of my head. Why would someone attack a place of worship? It is because of the Islamic mission and teachings of Sufi saints like Data Sahab that Islam spread in this part of the world. His life and example has earned him many followers. Yet there are some who consider devotees of saints as lesser Muslims and call adulation of others besides Muhammad sallallahu alaihi wasallam a blasphemy worth punishing with death. In this entire episode, it was the security guard who chased after the suicide bomber that intrigued me the most. I had to know who he was. Soon, I found myself at the shrine. The manager of the shrine tells me that the guard I saw in the news footage was a volunteer worker, one of the many devotees who guard the shrine out of a love for humanity and who seek no recompense in return. He tells me that the guard's name was Saleem. I finally have a name and an address. मैं सलीम से छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई थे जी। ये मेरा वालिद है। मस्जिद के साथ नीचे वाला गेट आपने शायद देखा होगा, हादसे की जगह सारी, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। वहाँ पुलिस वाले दो थे, खड़े थे। वो शख्स जो बमबार था वो वहाँ से गुजरा है, तो भाई को किसी ने आवाज़ दिया, सलीम। ऐसी उन्हें आवाज़ दी, सलीम पकड़ो, जा रहा है। तो दो लड़के वो और रज़ाकार थे, वो उनकी शहादत के बाद वहाँ पे आए फिर। वो बड़ा जो मीनार है उसकी दूसरी तरफ ऊपर से तो उन्होंने दौड़ लगा दी, और इन्होंने जो नीचे की तरफ से दौड़ लगा दी, और बमबार आगे दौड़ रहा है। ये पीछे आपने मूवी में भी देखा था, टीवी में भी दिखा रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जो ही वो पहली सीढ़ी पे उन्होंने पाँव रखा, उसके नज़दीक पहुँच चुका था, उसने कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मेरे पास बम है। तो भाई जो साथ खड़े थे, जो उस लड़का शहीद हुआ और जो वहाँ पे कोने में बचा हुआ आदमी था, उसने भी ये आवाज़ दिया कि सलीम अख्तर की ये आखिरी जो लफ्ज़ थे वो थे ये, अगर तेरे पास एटम भी हो तो अगर तेरे पास एटम भी हो तो। इतने लफ्ज़ थे कि उन्होंने इसी तरह उसको अपनी गिरफ्त में लिया, और उसके पास जो बैग था वो धमाका हुआ, अमरूद वो फटा, वहाँ पे वो शहीद हो गए। तो उस मवाद के बारे में ये गवर्नमेंट भी और मुख्तलिफ आया था कि वो कहते हैं कि 20 किलो का मवाद था,
अगर वो जो दूसरा बम्बार गया तो उसकी वजह से सैकड़ों में अगर हुई हैं, तो ये अगर बड़ा बम्बार ऊपर चला जाता तो वह हज़ारों में तादाद होती। उन्होंने उसको अपने मुसलमान भाइयों के लिए और इस्लाम के लिए और दाता साहब की क़ीदत में, उनके इश्क में उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने अहल-खाना सबको भूल के उनके इश्क में अपनी जान का नज़राना पेश करते हैं इस कौम के लिए, इन मुसलमानों के लिए। When government policies are cloaked in secrecy, it falls to public imagination to account for the atrocities being committed in their midst. I had my own opinions, but I also wanted to know what others thought of the situation. बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर इतनी दहशत गर्दी है कि अब हम शॉपिंग करने जब आते हैं बाज़ार के अंदर डर लगता है कि अभी ना जाएं, ईद के बाद आ जाएं तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। अब तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, रहने को दिल नहीं करता यहाँ पे। हमारे जो हुक्मरान है वो सही नहीं है, वो काफ़ी उन्होंने पहले तालिबानों को बना दिया, फिर वापस जो सा है वो कह रहे हैं कि वापस निकल जाएं, लेकिन अब वो वापस जाएंगे नहीं, उनके इतने पंजे मजबूत हो चुके हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। परेशानी कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, बिजनेसमैन पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, कारोबार है ही कोई नहीं। कोई इन्वेस्टर आता है वो भाग जाता है। जब तक इन्वेस्टर मुल्क में नहीं आएंगे कारोबार कैसे होगा? कारोबार हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टर क्यों भाग जाते हैं? वो कहते हैं हमारा पैसा डूब जाएगा। जिस मुल्क में अपने भाइयों को खुद मारेंगे उस पर दूसरा आदमी कैसे दबार करेगा? वो एक शेर था पुराना, कहता है दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो हमारे चिरागों ने हमें बुझाया। Terrorism is a problem in Pakistan, but not the most critical in public consciousness. It is telling when people would rather talk to me about power failures and unemployment than suicide bombings. To an ordinary person, the real terrorist is a government that doesn't provide for its citizens. Fretting over extremism strikes many as a first world problem. This is Captain Bilal Zafar, Shaheed. My younger brother, he was from 3 Commando Battalion and he sacrificed his life for the cause of Pakistan in Beyji operation. Before the war against terrorism started, Swat was considered to be a paradise for Pakistan, and it was a very attractive place for the foreign tourists, and the tourists from all over the world, they visited that place. But after this, when the terrorists and miscreants, they entered Swat and they tried to finish off the raid of the government, at that time the intimidation policy started by these terrorists and the miscreants, because they wanted that in Swat, the type of government which they want, that should be there. And they were forcing pressure on the local of that area. Our General Officer commanding Special Services Group, he called 50 volunteers for that operation. It was night of 16th May, when last time I went to Bilal's room, and he was sitting there and he was marking the map of operational area. I never knew that it was last meeting for Bilal. So he told me that when my body will come, you have to accompany that body and place this uniform on that body, so that the body should reach my village with this uniform. So I was really in shock when he told these things, and I took it as a joke, but he was very serious at that time. Hosana sir was such a peak that it was a vantage point for the miscreants, and they were having their stronghold in that area. At 12 o'clock they started off, and after the walk of 6 hours in mountains, I must say that in rigid mountains and cold weather, they carried out this operation, and they captured this peak at about 6 o'clock in the morning.
After capturing that peak, they were moving ahead for further targets. And unfortunately, some miscreants, they were hiding in far area. They shot a rocket launcher on him, and that rocket launcher exploded near him, and that caused his shahadat. That man there with his gun drawn is a police officer. In Pakistan, the police is always armed, triggers never too far from their fingers. Policing the 6th most populous country in the world is not an easy task. When opportunity is stifled, when few are educated, and injustice is visible everywhere, millions are available to be recruited to any banner that promises change. Try as they may, the police cannot trace the undercurrents of a constantly shifting society. बेटा बहुत अच्छा से बहुत चंगा से मेरे वास्ते बड़ा कुछ सोच गया मेरा अगला चांद सवार के चांद सवार शौक सी उन्हें शौक पूरा के 13 साल में संगीत पूजे में ये अंदाजे कोई दरबार नहीं जरा मेरे पुत्र छड़िया भाई सलीम को मुंसलिक थे वो हज़रत मौलाना अला यार खान रहमतुल्लाह अलैह के चकराले के चकवाल के रहने वाले थे और असल वो बैत जो थे मोहम्मद अहसन बेग साहब पे थे उन्होंने वहाँ भाई ने वहाँ से ये सब सीखा था वहाँ से ये इल्म पाया था और इसीलिए जाकर दाता दरबार पे दिन रात ड्यूटी देते थे ताकि मैं अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक हो जाऊँ। कितने अरसे से वो दाता दरबार पे रज़ा करते? कमो पेश वो 18-20 साल से लगातार कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी किसी किस्म की कोई उजरत नहीं दी जाती थी बल्कि वो अपनी जेब से खर्च करते थे। उनकी आमदन बड़ी थी तो हफ्ते में 2-3 हज़ार रुपया वो कमा लेते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उनके साथ बड़ी भाई भी थे और काम करते थे। मैं स्कूल में पढ़ता था सरगोदे रहता था पढ़ता था वो जो है उधर लाहौर में होते थे। रमज़ान को अक्सर वो मुझे साथ ले जाया करते थे वहाँ पे बुला लेते कहते कि आओ 4 दिन ना मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो पहले रमज़ान से लेके 30वें रमज़ान तक आखिरी रमज़ान तक उनकी यही काम मैंने देखा है कि वो मशीन पे बैठते थे सिलाई के लिए और रात नमाज के टाइम नमाज पढ़नी है सारी रात भी काम कर रहे हैं फजर के टाइम मशीन से उतरे हैं और सहरी की है फिर मुझे कहा आप सो जाएं खुद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसी तरह उनका सारी रात रमज़ान जाग के गुजर जाता था। ये मेडल है तारे बसालत SBT जो बिलाल को बेचारा ऑपरेशन पे मिला था। ये लास्ट मैसेज है जो बिलाल ने अपनी शहादत से ऑपरेशन पे जाने से 4 घंटे पहले ये मैसेज अपने जितने भी रिलेटिव्स थे या फैमिली मेम्बर्स और अपने जो फ्रेंड्स थे उनको ये मैसेज किया था। इन द रोर्स ऑफ बुलेट्स इन द थंडर ऑफ बॉम्ब्स देयर आर अ फ्यू हु जस्ट डोंट स्टॉप नोइंग दैट दे आर सराउंडेड बाय डेथ नोइंग दैट दे कुड लीव देयर वाइव्स विडो एंड चिल्ड्रन ऑर्फन but they just keep on moving because something is pumping in their hearts and flowing through their veins known as honor, devotion, motivation. Death before surrender. That's why they say Pakistan Army Zindabad. ये बिलाल की फुटबॉल मैच ये भी ड्यूरिंग फुटबॉल मैच ये आइवरी कोस्ट में ही अगेन फिशिंग करते हुए बिलाल ही वाज बास्केटबॉल टीम कैप्टन बिकॉज इसको ड्यूरिंग स्कूल टाइम से ही बास्केटबॉल खेलने का शौक़ था। ये बिलाल की SSG से पासिंग आउट की जिसने ये पास आउट हुआ था SSG से उस वक्त की तस्वीर है। और ये जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की माय पेरेंट्स दे कुड नॉट रिकंसाइल एंड दे कुड नॉट रिकवर द बिलाल्स शहादत एंड टिल नाउ दे आर अंडर शॉक। माय पेरेंट्स आर रिजाइडिंग इन विलेज जस्ट नियर बिलाल टाउन। Every weekend I go there, but in weekdays also I visit 1 or 2 twice there. मिस तो बहुत करते हैं मतलब देख लें अबाउट 26 years एक जगह पे हम एक साथ रहे हैं। It was such a strong bond कि I miss him हर जगह पे। खाना खा रहा हूँ मिस करता हूँ कि
واک کے لیے جا رہا ہوں مس کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ گاؤں میں جب اسپیشلی جاتا ہوں اس میں بہت مس کرتا ہوں. I try that I should not remind of Bilal, but whenever they see me, I can feel that they are remembering Bilal. یہ آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ باڈی آرمر ہے کیپٹن بلال کا، جو اس نے جب شیل اس کو لگا پہنا ہوا تھا، اور یہ کٹا ٹوٹا پھوٹا ہوا یہ اس کا ٹکڑا ہے. یہ وہ یونیفارم ہے جو اس نے آپریشن پر جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اور اپنے بڑے بھائی کیپٹن زرار کو دی تھی کہ میرے کافن کے اوپر یہ رکھ کے لے کے جانا. اور واقعی یہ یونیفارم اس کی کافن کے اوپر رکھ کے لایا گیا تھا. یہ چند ایک نشانیاں بلال کی میں نے مینٹین کی ہوئی ہیں. باقی یہ شیلڈ جو قرار کمپنی کی آپ کے سامنے ہے، یہ مرتجز اس کا کورس ہے. گیٹ کھلا، وہ دو، ایک احمد نواز کیپٹن اور ایک میجر عثمان، وہ دونوں آئے. وہی میں اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کے پاؤں میں پڑ گیا، ایک میرے پاؤں میں. پھر وہ پتہ نہیں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی ماں کو کہیں اور بہنوں کو کہ ان کا چہرہ دیکھ لیں، پھر ہم واپس لے جائیں گے. ہم نے جا کے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں 10 منٹ بھی نہیں کھڑے ہونے دیا، اس کا چہرہ دیکھا، الحمدللہ ایسے لگ رہا تھا شیر پڑا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے. اتنی چوٹ کھانے کے باوجود وہ ہنس رہا تھا. اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کو دفن کر دیا. پہلے تو پتہ ہی نہیں، پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ دہشت گرد مسلمان ہیں، ظاہری بات ہے یہ ہمارے. لیکن جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو سب غیر مسلم ہیں. شہادتیں گواہیوں کے بعد انہوں نے جن ہمارے مسلمانوں کو عذاب میں ڈالا ہے، کیوں ٹانگیں کاٹ دی ہیں. پھر کئی یہ افسر، کئی ان کا آرمی والوں کا بھی دیکھو انہوں نے دہشت گردوں نے کیا حال کیا ہے کہ ان کے سر کاٹ کے فٹ بال بنا کے کھیلا ہے. ہم نے دیکھی ہیں ویڈیو. تو وہ تو ان سے ایک اندر ہی اندر ایک وہ غبار سا ہوتا تھا کہ کوئی آ کے کہے کہ یہ ختم کسی طریقے سے ہو سکتے ہیں. اللہ جانتا ہے میرا بیٹا اگر دوسرا بھی اسی طرح شہید ہو جاتا اس موقع پہ جس طریقے سے وہ شہید ہوا ہے تو میں کبھی بھی نہ کہتی کہ یہ کیا ہوا. جب 10 لاکھ بلال ظفر سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلیں گے تو دہشت گرد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدم نہیں روک سکے گی. Bilal's mom is right. It should not just be the duty of a few to protect their country. When you have to bring a nation out of despair, everyone needs to pull their weight. Everyone needs to stand up against the enemy. The problem is that people have a very divided view of who the enemy is. یہ طالبان جو اصل طالبان جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ دین آئے، اسلام آئے اور پیروکاری محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے، ہم اپنے کلمے پر محفوظ رہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے برعکس ایسی پارٹیاں ایسے ایجنٹ بنا دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں یہ سب افراتفری ہے. یہ سب اسرائیل کی چال ہے اور امریکہ کی چال اور انڈیا کی چال ہے. یہ 3 ملک پوری دنیا میں مسلمانوں کو برباد اور نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. طالبان ہم لوگوں میں سے ہی ہیں، وہ کوئی امریکہ سے تو نہیں نہ آتے، ادھر سے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. فرقے بازی ہے جی، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو ساروں کو گندا کر دیتی ہے تو چند لوگ ہی، لیکن گندا ساروں کو کیا ہے انہوں نے.
Herein lies the gist of political polarization in Pakistan. There are some who deny homegrown terrorism and consider conventional rivals responsible for all of Pakistan's problems. They think more religion is the answer and that the Taliban are justified in their hateful agenda. The opposing voice that denounces Taliban ideology is being silenced through rampant suicide bombings and targeted killings. In times like these, it is ever more important to stand next to the people who fight back, when it is so much easier not to. ये बड़े सलीम रशीद के बड़े बेटे हैं, कलीमुल्लाह इनका नाम है, और चांद चांद करके इनको हम पुकारते हैं। ये अपने बाप का एक सबसे ज़्यादा जो लाडला प्यारा था, इस्तेशाम हैदर, इसका नाम है बुनियाद हुसैन। ये उनके बाद बेटी जो है ना 4-5 माह पैदा हुई है, हाजरा सलीम उसका नाम हमने रखा हुआ है। बड़ा कहता है कि मैं पढ़ के पुलिस वाला बनूंगा और उनको मारूंगा जिन्होंने मेरे बाबा को मारा। बच्चियाँ निके निके अल्लाह ताला इन्हें जन्नत पर दौड़ते। बहुत याद आते हैं आपको? हाँ, वो याद आते हैं। मैं सुबह रोज जाती थी उसके पास। ये मेरा बेटा आंदा सी ना, गेट ला सा रात को 2 बजे 4 बजे आंदा सी। बेटा मेरा छापड़ कपड़े आने या कुछ चीज़ नहीं रख लेना मेरे सिर। इस समय पैर टूटता हूँ। मैं आखना सलीम इस तरह क्यों करना चाहना आखना मां जी एक कदम ना दिया नहीं मैं तुहाडी दे सकता जेड़ा तुसा रात नूं मेरा गेट बनाया। बहुत अच्छा मेरा बेटा सी। वो सारे चंगे ने पर वो दुनिया तो वखरा ही आया सारे इन्ना नेक सी इन्ना असीं ते इन्ना जोगे ही नहीं सा जिन्ना जो सानूं उस गुनाह छड़िया। What Imran, Zaraar and their parents have gone through are not rare incidents. Over 5,000 servicemen have died in active combat, and close to 40,000 civilians have died in terrorist attacks and the war against terror since 2001. Every year, hundreds, if not thousands, fall victim to terror, their families permanently fractured. Once the mission of fighting terrorism was assigned to him, it was a very, very, very difficult operation. Only those who dare could undertake that operation. So he went with the view either to achieve his goal, his mission, or not to come back. This was what I understand, and he gave up his life to achieve that mission. I was very sure he would make a general one day because of his enthusiasm, because of his performances, because of his appointments. The amount of respect he got as a Shaheed. He is also called Savior of Swat, and it is not a very little title that has been given to him. Certainly, I feel much, much proud, and I feel the place that he has got is much above than becoming a general in the army. He was so loving. Even if I try, I can't remain away from him. Although my other son, Captain Zaraar, he is putting up in Pindi, and he most of the times remain annoyed with me that, Pop, you don't come over here, you don't stay put with me. Whereas you have adopted village life and you keep staying there. So I tell him, son, this is my compulsion. I can't stay away from Bilal. Most of the times, after his martyrdom, we keep sitting over here where we are sitting at the moment, and I keep looking at his small but very graceful little tomb. And I like the place so much, and I like looking at it so much that not at times, but most of the times, I sleep over here. I bring my bed out and I sleep. So I feel as if he is lying by my side.
And I pray to Allah the Almighty that his mission, which is not complete as yet, it reaches to some conclusion, and this terrorism is eliminated from our country, and we also enjoy some peaceful sort of atmosphere. In this conflicted and terrorized nation, there exists a force that gives me hope every day. An army of people opposing violent extremism. With this film, I honor those people. Those who speak up, those who risk their lives, and those who have sacrificed their own to save the lives of others. They are the other army.